Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आउ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विषय रे पढ़िबा तो देखो प्रीवियस क्लास रे हमें पोलराइजेशन विषय रे पढ़िथिला तो जते बेले गोटे डाइइलेक्ट्रिक रो पोलराइजेशन हमें देखिबा एक्चुअली इट इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड सो पोलराइजेशन डेंसिटी जोटा अछि इट विल बी directly proportional to the product of the net electric field which is present inside the dielectric and the electric permittivity of free space. That means polarization P is proportional to this product epsilon 0 E. Okay, now let us introduce a constant of proportionality chi E. Okay, so as you can see, so that we can write now P is equal to epsilon 0 chi E into your electric field E. एठी chi E एटा को आमे कहबा electric susceptibility of this dielectric. Okay, and this electric field E is nothing but equal to E0 minus EP जोटा हमें previous class रे देखिथिला. Okay, आउ epsilon 0 तो जेमति कहली permittivity of air or free space or vacuum. Okay, so स्केलर रे देखिले P is equal to epsilon 0 chi E E. Okay, अच्छा ताले एबे chi E रो वैल्यू बा ससेप्टिबिलिटी रो वैल्यू हैला P by epsilon 0 E. Okay, so ए इक्वेशन रो आमे जानु छु जे ससेप्टिबिलिटी जो chi E अछि it has no units and actually it is dimensionless scalar constant. Okay, याको आमे डिफाइन करि परिबा as the ratio of polarization vector P to the electric field intensity E in the dielectric. Okay, so ये हैला electric susceptibility. एबे देखिबा dielectric constant कोन. So for this जेंति हमें देखुदला जे गोटे parallel plate capacitor हमें नै जिबा प्रथमे कोन करिबा suppose सेटा होची गोटे blank capacitor. Okay, so nothing is inside it, only air or vacuum is present as the medium between the two plates. Okay, so let us now say the charges on the two plates are plus q and minus q. Obviously the two plates are oppositely charged as you can see in this figure. So ebe kono kariba gote uniform electric field ame apply kariba between the plates. Okay, as you can see E0 is the uniform electric field applied along this direction. Okay, acha ताले एबे जो ए चार्ज्ड प्लेट्स अछि ता मझिरे जदि आमे गोटे dielectric slab introduce करिबा. Okay, so this is the dielectric slab. ताले एबे कोन हबो नेगेटिव चार्ज गुडा पॉजिटिव प्लेट आडकू आउ पॉजिटिव चार्ज गुडा नेगेटिव प्लेट आडकू माने मूव करिवे. ओके, सो एहा द्वारा एबे dielectric टा polarization हबो यारो. Okay, the dielectric will get polarized and the net electric field inside the dielectric will be given by E equal to E0 minus EP. एठी EP हेगला electric field which is produced inside the dielectric due to the induced charges as shown in figure. Okay, so EP एठी होची तमरो opposite to the applied field. Okay, although EP रो ए ऊपर डायरेक्शन टाकू एटा एक्चुअल डायरेक्शन न हो तार डायरेक्शन टा हला ए पटे opposite. Okay, so this is opposite to the applied field. Okay, now the ratio of electric field inside the capacitor which is without dielectric to the electric field inside the capacitor having the dielectric is called your dielectric constant and it is denoted by
K आपको आमे देखिबा ए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर भी हबो एटा ओके देखिबा सेटा आपको सो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आमे लिखि परिबा ए हिसाब रे रेशियो जो कहला K इज इक्वल टू E0 बाय E और E0 बाय E0 माइनस EP जोड़ा आमे ऊपर पाइथिला अच्छा जो आमर एप्लाइड फील्ड अच्छी E0 obviously it is greater than this EP okay which is the field produced inside the dielectric due to the induced charges so obviously जदि E0 टा EP रु बड़ हेबो ताले निहाती भाबरे एई क्वांटिटी टा पॉजिटिव हेबो ओके आउ ग्रेटर देन 1 हेबो ओके सो K is greater than 1 so we can say since the electric field between the plates of the capacitor with air or vacuum as the medium is given by E0 equal to sigma f by epsilon 0 it is sigma f ta hela surface charge density due to the free charges on the plates of the capacitor. Similarly ame electric field which is due to the induced charges or bound charges inside the capacitor inside the dielectric sorry so याकू भी लिखि परिबा EP equal to sigma p by epsilon 0 एठी sigma p हिगला polarization per unit area और याकू हमें simply polarization charge density मध्य कहि परिबा of the dielectric slab ताले ए E0 और EP रो वैल्यू को यदि हमें रिप्लेस कर देला then we will get the value of K which is the dielectric constant is given as sigma f by sigma f minus sigma p okay so eta gote value te paila ame dielectric constant ro let us now discuss some of the special cases the first case re eti kohuchi if the dielectric sample is made up of metal तो यदि मेटल रे तैयारी हेइथिबो ताले एबे सिग्मा p रो वैल्यू इक्वल टू सिग्मा f हेबो ओके तबे काहे कि एमते हला देखो इन केस ऑफ मेटल आमे जानिछु मेटल इज हाईली कंडक्टिंग तेणु करी सेठी जेते सब तमरो चार्ज रहिबो दैट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ योर फ्री चार्जेस ओके द चार्जेस कैन मूव फ्रीली ओके इनसाइड द मेटल तेणु करी sigma p is equal to sigma f and thereby the value of the dielectric constant K becomes equal to infinity that means the metal will have infinite amount of dielectric constant okay second case रे जदि आमे कहबा जे डाइलेक्ट्रिक टा वैक्यूम रे तयारी बा एयर रे तयारी सपोज ताले एबे आउ किछि भी बाउंड चार्ज रहिबनी ओके एयर और वैक्यूम होची पूरा फांका जगह ओके देयर इज नो चार्ज सो sigma p is equal to 0 that means now the dielectric constant K is equal to 1 okay so the dielectric constant for the case of vacuum is equal to 1 suppose now let us say the capacity of the capacitor with vacuum or air without dielectric याको हमें नहीं गला C0 ताले potential difference between the plates of the capacitor having air as the medium यारो value हबो केते हमें जानिछु V0 is equal to E0 D एरी D हेगला distance between the plates of this capacitor ताले एबे C0 रो value जोटा कि ratio of the charge and potential difference that is Q by V0 becomes equal to Q by E0 D okay तो एटा हला capacitor without dielectric similarly let us say capacity of the capacitor with dielectric between the plates is equal to C ताले सेही हिसाब रे हमें लिखि परिबा एबे देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विथ डाइलेक्ट्रिक या कुनी गला जदि हमें V ताले V इज इक्वल टू ED डिस्टेंस तो प्लेट भितरे सेही समान ही अछि सो C रो वैल्यू हमें लिखि परिबा Q by V और Q by ED हला हमरो वैल्यूटा एबे एई दुई इक्वेशन को हमें जदि डिवाइड कर देबा देन C by C0 यार वैल्यू आसीगला E0 by E which is nothing but your dielectric constant K और यार वैल्यू टा equal to epsilon r which is the relative permittivity हबो okay एटी साइड रे मु एठी लिखिछि as you can see the ratio of the capacitance of a capacitor with dielectric to the capacitance of the same capacitor
without dielectric is defined as the dielectric constant. Okay, and it is also equal to the relative permittivity, which is epsilon r, which is nothing but the ratio of the permittivity of the medium, which is epsilon, and the permittivity of free space, which is epsilon 0. That means we can write K is equal to epsilon r, which is equal to epsilon by epsilon 0. Okay, and it is a measure of the polarization of that particular dielectric. Okay, hence ଏବେ ପୁଣି ଏଇ वापस ଏଇ इक्वेशन को आस ଦେଖ ଆମେ ऑलरेडी जानिछु जे E0 is greater than E, so that we can say C is greater than C0. Hence the capacity of a capacitor will be increased on introducing a dielectric between the plates. Okay, अच्छा ଏବେ ଏଇ ଉପରେ जो ଆମେ इक्वेशन पाइथिला for the value of the potential difference ताको भी जदि आमे डिवाइड करिबा with dielectric and without dielectric, then V0 by V रो वैल्यू हे गला E0 D by E D. ओके एठी D और D समान अछि, कैंसिल हे गला. सो एबे देखो V0 by V रो वैल्यू ताले आसिला E0 by E. So this is also nothing but your dielectric constant K. Okay, V0 by V जहाँ E0 by E ताहा. Okay, so यार वैल्यू आमे dielectric constant already पाई सारछु. So already आमे जानिछु जे E0 is greater than E, that means V0 will also be greater than V. Hence the potential of a capacitor decreases on introducing a dielectric slab. Okay, let us now see the relation between the dielectric constant and the susceptibility. Okay, so for this let us consider a charged parallel plate capacitor having vacuum or air as the medium between the plates. Okay, suppose एठी charge हेगला capacitor रो Q, surface charge density of the plates हेगला sigma f. ताले uniform electric field जदि हमें apply करूछु between the plates of the capacitor, that will be E0 will be equal to sigma f by epsilon 0. एबे कोन करिबा आमे dielectric slab गुटे इंट्रोड्यूस करिबा between the plates of the capacitor. ताले एई इंट्रोडक्शन द्वारा एबे dielectric slab जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो संस्पर्श रे आसिला, so it will get polarized. Then the net electric field inside the dielectric, obviously ऊपर जो आमे देखिला E is equal to E0 minus EP. एठी EP हेगला electric field which is produced inside the dielectric slab due to the induced or bound charges. Okay, ताले EP याको आमे लिखि परिबा सिग्मा P by epsilon 0. सिग्मा P आमे जंती देखिला ऊपर is the surface charge density due to the induced or bound charges. ताले एई वैल्यू को ऑलरेडी एई टाइप रो ही आमे ऊपर डिस्कशन करिछु, एटा पुनी थरे लेखा हेछि एठी. सो एई वैल्यू को अब जदि आमे पुट करूछु ताले इक्वेशन 4.20 रे हला एई 4.20 एई जगह रे जदि आमे पुट करिबा EP रो वैल्यू को रिप्लेस कर दबा, ताले देखो एठी E is equal to E0 minus sigma P by epsilon 0. Okay, अच्छा now polarization जेते बेले गोटे dielectric रो होउछि आमे जानिछु it is nothing but equal to its polarization माने से जो surface charge density सहित सेटा समान रहे, तेणु P is equal to sigma P. so आमे रिप्लेस करि परिबा इजीली. so एबे E is equal to E0 minus P by epsilon 0. now एबे कोन करिबा बोथ साइड रे आमे डिवाइड करिबा E. okay, so एटा देखो LHS रे एटा तो E by E is nothing but equal to 1 हबो. okay, आउ RHS रे भी आमे E डिवाइड कर दबा. so एबे कोन आसिला वैल्यू 1 is equal to E0 by E minus P by epsilon 0 E. so एठी देखो ए जो E0 by E अछि, this is nothing but your dielectric constant K. okay, so एबे एथिरु हमें आ गोटे जिनस भी ऊपर जो पाइला इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी गोटे डाइलेक्ट्रिक रो तार वैल्यू P by epsilon 0 E आस्तला. so ए दुई क्वांटिटी को हमें यदि रिप्लेस कर दबा, then it will become 1
is equal to K minus chi E. Okay, or K is equal to 1 plus chi E. So it K ର value କେତେଟା ବହିରେ epsilon r is equal to 1 plus chi E ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ. Okay, same ଜିନିଷ because your dielectric constant is nothing but equal to your relative permittivity. So this is the relation between the dielectric constant K and the electric susceptibility, which is chi E of the dielectric. Okay, finally let us see the relation between the electric field polarization vector and your vector d vector, okay, which is the displacement vector. So for this let us again consider the polarization of a dielectric slab which is placed between the plates of a charged parallel plate capacitor. Again sigma f hela amara surface charge density due to free charges on the plates of the capacitor. Now sigma p again surface charge density due to the bound or polarization charges. Okay, the magnitude of the electric field which is present between the plates of the charge plate capacitor with air as the medium, okay, it is E0 is equal to sigma f by epsilon 0, okay, without dielectric. Similarly, the magnitude of the electric field inside the dielectric due to the induced charges eta ହେବ କେତେ EP यार value आसीगला sigma p by epsilon 0. Okay, ताले net electric field which is present inside the dielectric, it will be how much? E is equal to E0 minus EP. Okay, ताले ଏବେ net electric field which is present inside the dielectric याको आमे लेखि परिबा E is equal to E0 minus EP. ऑलरेडी एटा ऊपर आमे देखिथिला. So E0 रो वैल्यू हे गला E plus EP. अच्छा EP को आमे एबे रिप्लेस कर देबा ए जो वैल्यूटा पाइछु सिग्मा p by epsilon 0. That means E0 रो वैल्यू आसिला E plus sigma p by epsilon 0. अच्छा एबे ए जो epsilon 0 टा अछि याको आमे आर पट को नै जिबा माने मल्टीप्लाई कर देबा बोथ साइड रे. सपोज आमे epsilon 0 ताले epsilon 0 E0 is equal to epsilon 0 E plus sigma p. Okay, अच्छा ए sigma b को आमे ऑलरेडी एटा जानिछु. दिस इज नथिंग बट योर पोलराइजेशन p रिप्लेस कर देला आमे. ओके, एबे कोन करिबा एबे आमे एठी रिप्लेस करिबा E0 रो वैल्यू जोटा आमे पाइथिला सिग्मा f बाय epsilon 0. सो एठी देखो epsilon 0 कैंसिल हे गला. सो सिग्मा f रो वैल्यू आमे पाइला केते ना epsilon 0 E plus p. सपोज आमे एठी सिग्मा f को इक्वल टू d बोली लेखिला. ओके, सो एठी d हला जेमती कहउतली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ताले एबे इक्वेशन को आमे लिखि परिबा d is equal to epsilon 0 E plus p. Okay, or in vector form the vector d is equal to epsilon 0 vector E plus vector p. So relation एबे d आउ E भितरे आसीबो केमती आमे जानिछु जे displacement vector which is nothing but the surface charge density in case of your free electrons, एठी free charges. So एठी आसीगला q by a, okay, charge per unit area where a is the area of each plate of the capacitor. एटा हमें जानिछु. Similarly एबे electric field को यदि देखिबा between the plates of the capacitor with dielectric in between the plates याको हमें लिखि परिबा E is equal to q by epsilon 0 ka. ओके, ताले एठी q रो वैल्यू केते आसिला epsilon 0 E ka. ओके, सो ए जो q रो वैल्यूटा आछि याको हमें इक्वेशन 4.31 रे पुट करिबा. ओके, ताले आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू d रो वैल्यू केते आसीबो एबे epsilon 0 ka E by a. एठी a और a कैंसिल हे गला. सो केते आसिला d रो वैल्यू epsilon 0 k E. ओके, सो मन रखो आउ थरे कहूची ए k जो लिखाई छि इट इज नथिंग बट योर रिलेटिव परमिटिविटी epsilon r. सो d इज इक्वल टू epsilon 0 epsilon r e. ओके, ए हिसाब रे भी हम लिखि परिबा. आ ए जो प्रोडक्ट अछि ना ए epsilon 0 और epsilon r, दिस इज नथिंग बट योर epsilon. ओके, epsilon जोटा कि तमरो परमिटिविटी. ओके,
free space आउ relative permittivity दुईटार product टा. Okay, so you can write D is equal to epsilon E. Okay, this is the permittivity of the dielectric. Okay, vector form रे ताले हैला केते vector D is equal to epsilon E. Okay, अच्छा जदि यूनिट्स देखिबा आमे ए D रो it is coulomb per meter square आउ P बा पोलराइजेशन वेक्टर रो एटा मध्य coulomb per meter square. ओके एटा पाइला आमे कोन D आउ E भितर रिलेशन टा सिमिलरली एबे P आउ E भितर भी रिलेशन आमे पाई परिबा. ओके ऊपर जो इक्वेशन आमे उठे पाइतिला 4.21 जो तेरे कि आमे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन पाइतिला E0 is equal to E plus P by epsilon 0. अगेन आमे ए epsilon 0 को मल्टीप्लाई करिबा बोथ साइड रे. सो एबे देखो आमे रिप्लेस करि परिबा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आमे पाइतिला k is equal to E0 by E एथिरो पाइबा आमे केते E0 equal to ke या को रिप्लेस कर दबा. ओके सो E0 जगह रे आमे ke लिखितला. ओके अच्छा एबे कोन करिबा बिकॉज हमको रिलेशनशिप दरकार कहाँ कहाँ भितर P आउ E भितर. सो P रो वैल्यू एबे केते आसिला P को गोटे साइड आनी आसीबा. सो E को एठी देखो दुईटा जाक टर्म रे अछि कॉमन नै गला. सो epsilon 0 k minus 1 E. अच्छा एठी जदि आमे कहिबा जे डाइलेक्ट्रिक किछि भी जदि नाही ए कैपेसिटर प्लेट भितरे ताहले कोन हबो एटा हसिबो तमरो केस वैक्यूम रो. ओके सो फॉर दैट केस k is equal to 1 ताहले एबे p रो वैल्यू 0 होई जिवो बिकॉज 1 minus 1 is equal to 0. सो एटा होची एक्चुअली करेक्ट बिकॉज in the absence of dielectric there is no polarization. अच्छा आ गोटे जिनस k minus 1 को आमे लिखि परिबा is equal to your electric susceptibility chi E. तेणु करी आमे लिखि परिबा P is equal to epsilon 0 chi E into E. Okay, so this is the relation where chi E is the electric susceptibility of the dielectric. Okay, so this is all about your electric susceptibility and dielectric constant. Okay. Thank you.